वेरी गुड इवनिंग। सबका स्वागत है आपके अपने इस चैनल में बायजूस एग्जाम प्रेप। सो वेलकम ऑल इकोनॉमिक्स चैंपियन। कैसा था कल गेट का एग्जामिनेशन? राइट, तो ये बहुत सुनने में अजीब सा लग रहा है सर, गेट का एग्जामिनेशन। जी हाँ, जो लोग कल पेपर नहीं देने गए थे या जिनको पता नहीं था कि गेट के बारे में, सो हाउ वाज द पेपर? कैसा था पेपर? विश्वास कीजिए, 39 में से 32 क्वेश्चंस वी हैव डन। लेट मी शेयर दिस फैक्ट विथ ऑल ऑफ यू। आउट ऑफ 39 क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स, गेट में 32 क्वेश्चंस हमने किए हुए थे। नेट के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए थे इसमें, जैसे कि टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी वाला क्वेश्चन ले लीजिए, या सिग्न्योरेज ले लीजिए, राइट, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले लीजिए, रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या मान लीजिए सपोज इफ यू कैन टेक अबाउट द ओकुन्स लॉ, राइट। बहुत सारे क्वेश्चंस कल, बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन थे, तो 32 क्वेश्चन वाज आउट ऑफ बायजूस एग्जाम प्रेप नोट से। जी हाँ, जो नोट्स हम लोग यूजीसी नेट के लिए तैयारी करते हैं, उसी से हमारा कल गेट के क्वेश्चन पेपर में 32 क्वेश्चन आए थे 39 में से। इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्स। एपीएस वाला भी आया था, राइट। यस, कल होगा ये। यस, एपीएस वाला भी क्वेश्चन जो था, एपीएस क्वेश्चन एग्जैक्टली, सॉरी एपीसी वाला क्वेश्चन था, राइट। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस का। सो देखिए, बहुत सारे, तो आप लोग मुझसे कहते हैं कि सर आप गेट शुरू कीजिए। मैं कह रहा हूं कि गेट छोड़ो, नेट छोड़ो, अगर आपने इकोनॉमिक्स की तैयारी कर ली तो मान लीजिए आपने सब कुछ कर लिया। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि तैयारी एक, नौकरियां अनेक। ऑप्शन एक ही रखिए, मतलब सब्जेक्ट एक ही है, सब्जेक्ट पे मास्टरी रखिए, एग्जाम वाइज मत जाइए। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको नोट्स पता है, आपको डिटेल पता है, डेप्थ पता है, एक्सप्लेनेशन पता है, लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो गेट तो क्या, चाहे कोलगेट हो, चाहे नेट हो, चाहे सेट हो, चाहे पेट हो, चाहे रैट हो, चाहे रेट हो, कुछ भी हो, आप क्रैक कर जाएंगे, राइट। सो मुझे कल बहुत सारे स्टूडेंट्स के, ये लाफर का वाज आल्सो देयर। यस, यस, और इस सेशन में एक बहुत अच्छी सी बात यह है कि इस सेशन को मैंने क्यों उठाया है। सो नंबर वन, एजर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है ये सारे के सारे। आज पहले 10 क्वेश्चन जो है वो मैच द फॉलोइंग है, उसके बाद एजर्शन रीजन बेस्ड है। तो मैं थोड़ा सा शुरुआत करता हूं, देन आई विल लेट यू नो अबाउट दिस। सो यस, अब यहां पे आप देख सकते हैं क्या दिख रहा है यहां पे, डिस्कशन एंड एनालिसिस गेट 2022 का एग्जाम पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। तो पर्टिकुलरली मेमोरी बेस्ड है, जितने मुझे क्वेश्चंस याद रहेंगे, जितना आपको पता है आप मुझे भेजिए, बट मुझे जितना याद है मैं उतने करूंगा। पेपर वन, पेपर टू, मतलब कॉम्प्रिहेंशन, या फिर मान लीजिए कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला जो है, जनरल एप्टीट्यूड वाले जो क्वेश्चंस थे, इसके अलावा जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन जितने मैं रिकॉल कर सकता हूं, मैंने उतने बना लिए हैं, कहीं ना कहीं मुझे याद है। तो इतने सारे मैंने, कल हम लोग ये करेंगे। कल ये 8 फरवरी को है, तो जिन लोगों ने पेपर दिया है वो तो जरूर देखना, और जो लोगों ने पेपर नहीं दिया वो तो और जरूर देखना। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से? दोनों लोग ही देखना। जो पेपर कल देने गए थे वो तो पक्का देखना, बिकॉज उनको पता चल जाएगा कि कहां कहां गलती की है। और जिन्होंने पेपर नहीं दिया है वो भी जरूर देखना, क्योंकि इससे आपको यह समझ में आ जाएगा कि जो पेपर नॉर्मली हम लोग कर रहे हैं, कि जो की तैयारी कर रहे हैं, कि क्या नेट के साथ साथ हम गेट का ऑप्शन भी खुला रख सकते हैं। डेफिनेटली यस, कल हम इसके बारे में और बात करेंगे, ठीक है। तो आज इसके बारे में और नहीं। सो रिमेनिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे, थर्सडे को, इसी बार थर्सडे को हम लोग क्रोनोलॉजी की स्पेशल शुरुआत कर रहा हूं। बुक्स ऑथर बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे। और यहाँ पे एक और है 27 जो है, इसके बाद उसमें मैंने रखा है, सॉरी मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा, गॉडविन थ्योरी, गॉडविन थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, राइट। गॉडविन थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन और भी है, तो विल टॉक अबाउट दैट। ये मेरा यूट्यूब का सेशन सभी को पता है। आज वी आर गोइंग टू डू दिस, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, तो ये वाला जो है मैंने ट्यूसडे को किया है, गेट वाला पेपर डिस्कशन। हालांकि ये मंडे को ही था, लेकिन ये मैं ट्यूसडे को कर रहा हूं, कल कर रहा हूं, राइट। कल ये ऐप पे चलेगा, तो प्लीज मेक श्योर कि जरूर ज्वाइन कीजिएगा मुझे। एंड बाकी जैसा चल रहा है देख सकते हैं आप, राइट। यस, जैसे मैंने आपको बताया, प्रॉमिस किया, दिस इज टुमारो 8 फरवरी, 9 o'clock, 9 p.m. ऑन ऐप, राइट। डन, प्रॉमिस। When UGC नेट रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी आउट, ये एक क्वेश्चन है जो कि शायद मैं आंसर देना चाहूंगा इस टाइम पे। नवीन,
आई अंडरस्टैंड। देखिए सभी की प्रॉब्लम जो है अभी सबके अच्छे अच्छे स्कोर आ गए हैं, किसी के 76 आए हैं, किसी के 72 आए हैं, किसी के 84 आए हैं। बेसिकली पेपर टू में जो जो रिजल्ट आया है, जो जिन लोगों ने भी मुझे इंफॉर्मेशन दिया पेपर टू वगैरह में, सो आई थिंक सब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं नॉर्मली सभी के अबव 65 हैं, राइट। आई कैन से अबव 60 टू 60 के रेंज में है, और हाईएस्ट जिनको मैं जानता हूं उनके भी ये आए हैं। अभी एक प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम क्या है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि बाय फ्राइडे द रिजल्ट विल बी आउट, बट अभी तक रिजल्ट आउट नहीं हुआ है। इसका एक प्रोबेबल केस जो है, जो मे बी वन ऑफ द प्रोबेबल रीजन इज कि आप लोगों को पता होगा कि दिसंबर के टाइम पे जब हमारे एग्जाम्स खत्म हो गए थे, यूजीसी नेट का एग्जाम खत्म हो गया था, तब दिसंबर के कार्यकाल में ही जो उस टाइम पे जो यूजीसी के चेयरमैन थे, वो रिटायर कर गए हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली वन ऑफ द रीजन इज कि क्योंकि अभी आप लोगों ने कल न्यूज में भी देखा कि जो जेएनयू के जो वीसी थे, राइट, उनको अभी यूजीसी चेयरमैन ही हैज बीन अपॉइंटेड एज यूजीसी चेयरमैन। सो वन ऑफ द रीजन मे बी कि हाँ, थोड़ा सा जब व्हेन यू नो द पावर्स चेंज तो थोड़ा टाइम लगता है, सिग्नेचर्स होंगे, रिजल्ट्स को, मतलब हर चीज एक बार दोबारा से देखी जाती है। तो मे बी वन ऑफ द रीजन बिकॉज बिकॉज ऑफ विच द एग्जाम्स रिजल्ट्स थोड़े से डिले हो रहे हैं। बट आई थिंक हैविंग सेड दैट 10 तारीख तक रिजल्ट निकल जाना चाहिए। इससे ज्यादा डिले अगर होगा तो जून के या जुलाई के पेपर्स में फर्क पड़ जाएगा। सो अगर 10 फरवरी तक निकल जाता है, कट ऑफ निकल जाएगा, अब फाइनल आंसर की के साथ ही कट ऑफ निकलेगा। सो 10 फरवरी, दिस इज द टाइम, दिस इज द वीक व्हेन वी कैन एक्सपेक्ट बहुत सारी चीजें। तो वन इज यूजीसी नेट, नंबर वन। इसका रिजल्ट आउट होना चाहिए, डेफिनेटली आउट होना चाहिए। बहुत बेसब्री से सभी को इंतजार है। तो अगले 2 हफ्ते में बहुत सारे क्रूशियल इंपॉर्टेंट चीजें होने वाली हैं। अगर मैं इसको इस तरीके से बात करूं कि 2 हफ्ते, यानी कि अगर मैं देखूं बाय 18th ऑफ फरवरी, 18th ऑफ फरवरी तक मेरे सारे स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा कि किन किन ने नेट जेआरएफ पार किया, नंबर वन, और किन किन का गेट का रिस्पॉन्स कैसे आया है। सो अगर मैं बात करूं 10 फरवरी तक, मैं काउंट कर रहा हूं कि यूजीसी का रिजल्ट आ जाएगा, तो नेट जेआरएफ का रिजल्ट आ जाएगा, नंबर वन। एंड बाय 18th ऑफ फरवरी गेट के रिस्पॉन्स शीट भी आ जाएगी, गेट की रिस्पॉन्स शीट भी आ जाएगी। सो ये अगले 2 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पता नहीं, मैं तो मुझे तो नींद आना बंद हो चुका है। तो अब 10 फरवरी 18 फरवरी को क्या होने वाला है, इसी को लेके सोच रहा हूं कि थोड़ा सा जल्दी जल्दी ये सब हो जाए तो खुशियां मिले, और बहुत सारे लोगों ने मुझसे जो कैश प्राइज मांगा है वो भी सबको मैं दे सकूं। राइट, यस यस, चेयरमैन साहब जो है वो चेंज हुए हैं। सो ये फर्स्ट फीमेल वीसी, नो, नहीं 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 नहीं, थोड़ा गलत चले गए हम लोग। हम यहाँ पे यूजीसी के चेयरमैन की बात कर रहे हैं, क्रांति। ओके, आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। तो थोड़ा सा वेट करना और सही। देखो जिनका पेपर हो गया है, जिनका अच्छे नंबर है, आई नो थोड़े से जो बॉर्डर में है उनको थोड़ा टेंशन है, लेकिन नॉर्मली इट इज ऑल फाइन। वेट फॉर सम मोर टाइम। इतना तो वेट हम कर ही चुके हैं, 18 महीने से वेट कर रहे थे कि नेट का पेपर हो, और जब पेपर दिया तो थोड़ा सा और वेट सही। लेकिन जब रिजल्ट आएगा, जब कट ऑफ आएगा, तो जो खुशियां मिलेगी ना आपको, जो खुशियां मिलेगी ना, उससे बड़ी चीज नहीं होने वाली। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? यस। तो वन ऑफ द रीजन इज बिकॉज ऑफ दिस ओनली, जो मुझे दिख रहा है, जो मेरा मेरा कंडीशन जो मुझे समझ में आ रहा है, जितना मुझे समझ आ रही है, खुशियां मिलेगी नहीं मिलेगी? ओके, इन जेएनयू, हाँ, इन जेएनयू फर्स्ट फीमेल वीसी, दैट्स फाइन। बट मैं यहाँ पे यूजीसी की बात कर रहा था। थैंक यू पल्लवी फॉर पुटिंग दैट। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? एकदम सही, जशवंत, यस, गौरव सेज ओके। चलिए, लेट्स स्टार्ट विथ ओके ओके, आई गॉट इट, आई गॉट इट, आई गॉट इट, नाउ आई गॉट इट। सर एक रिक्वेस्ट, सुरभि इज राइटिंग वन रिक्वेस्ट। सर एक रिक्वेस्ट, प्लीज टेक सेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी, एज बहुत सारे अपकमिंग एग्जाम में यही सेक्शन है, प्लीज रिवाइज करवा दीजिए, एज बहुत मेसी हो गया है। ओके, आई थिंक आई विल टेक दैट रिक्वेस्ट सुरभि, बट थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिएगा, राइट, थोड़ा सा टाइम मुझे दीजिएगा। द रीजन इज वाई आई एम लिटिल बिट स्लो ऑन दैट साइड। इंडियन इकोनॉमी में अभी क्यों नहीं उठा रहा हूं, एक रीजन है, मैं आपको बताता हूं क्या है।
देखिए, इंडियन इकोनॉमी को एक बार मैं जरूर करूंगा, ऑन यूट्यूब और ऑन ऐप ही करूंगा मैं, लेकिन एक बार सही से इसका सीएसओ की तरफ से इसका डेटा आ जाए। बिकॉज अभी जो हम इकोनॉमिक सर्वे करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे जो रिलीज हुआ है उसमें सारा का सारा प्रोविजनल डेटा है, राइट। सो प्रोविजनल डेटा पढ़ के फायदा नहीं है, बिकॉज 2 महीने बाद वो चेंज हो जाएगा। तो वन ऑफ द रीजन, जब हम देखेंगे तो सीएसओ का डेटा जब रिलीज होगा, फर्स्ट क्वार्टर में ही रिलीज हो जाएगा, मार्च के एंड में रिलीज होगा, तो उस टाइम पे हम दोनों चीजों को पढ़ सकते हैं। तो आई आई डोंट वांट टू क्रिएट एनी डायलेमा की जैसे लास्ट टाइम भी था कि फिजिकल डेफिशिएंट वाज 9.5 और असल में आया 9.3। तो ये तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर आप कौन सा नंबर पढ़ेंगे, राइट। तो वो एक प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिले कर रहा हूं, और अभी आने वाले टाइम में तो ऐसा कुछ एग्जाम है भी नहीं। तो गिव मी टाइम टिल मार्च एंड, आई विल स्टार्ट विद द इंडियन इकोनॉमी का एक क्रैश कोर्स ही कर लेंगे, ठीक है, चलेगा। जी, देखो बीएचयू में जो डेटा आएगा वो आएगा पुराने वाला, अभी रिसेंट वाला तो नहीं आने वाला, राइट। जो लोग बीएचयू की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं बताता हूँ कि जो डेटा आएगा वो पुराने वाला आएगा, नया वाला नहीं आएगा। इकोनॉमिक सर्वे वाला नया वाला नहीं आ सकता, राइट, क्योंकि बेसिकली अब सभी के सभी एक ही बात लिखेंगे तो मैं किस किस को एड्रेस करूंगा। व्हेन इज द बीएचयू एग्जाम? When is the BHU exam? You can see how many papers I have kept for BHU. What should I do? Tell me. How many sessions I have kept for BHU? Right? चलिए, don't worry. Let's start with the session now. ओके, सो कल जुड़िएगा मेरे साथ। पहला क्वेश्चन नॉर्थ ईस्ट का, पहले 10 क्वेश्चन जो है वो मैच द फॉलोइंग है, उसके बाद सारे के सारे बेसिकली एजर्शन है, ठीक है। द परसेंटेज ऑफ टोटल वेरिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन बाय अ सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। परसेंटेज ऑफ टोटल वेरिएशन, तो ये तो सिंपल हमारा आर स्क्वायर हो गया, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ग्लोबल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, मैंने हमेशा बोला है जब ओवरऑल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस देखेंगे तो एफ टेस्ट यूज करेंगे, राइट। और जब सिंगल सिंगल वेरिएबल का सिग्निफिकेंस टेस्ट करते हैं तो टी टेस्ट यूज करेंगे। सेटिस्फैक्शन ऑफ बोथ, दिस इज फिशर इंडेक्स, एंड कांस्टेंट वेरिएशन इज कॉल्ड एज होमोसेडास्टिसिटी। तो सिंपल सा फंडा हो गया, अब इसको मैच कर लेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 2 and 4, I think ऐसा कुछ होगा, 3 1 2 4, it should be A, let's see, right. Indian economy is tough not to crack. Soumya, you are saying because you might not be my student in that case. If you have been following my Indian economy segment before the net examination, तो आप शायद ये नहीं बोलते। I'm the one who come up with the Indian economy not only from economic survey, SRS, PIB reports, many other things, right? Okay, so अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर तो मुझे कुछ अलग लग रहा है यहाँ पे। I think I might have put it wrong. It is not B, it is has to be 3 1 2 4, right? तो it has to be A. ये शायद मैंने गलत टाइपिंग कर दिया है यहाँ पे। Anyway, next question. Phillips Ferron test, Phillips Ferron test, KPSS test. Then you have unit root and Dickey-Fuller, augmented Dickey-Fuller. So all says stationarity. F test क्या है? Test of significance of overall regression. Durbin Watson is basically autocorrelation. Granger is causality. एंजल ग्रेंजल टेस्ट, ठीक है। तो इसमें भी मैच कर लीजिए, तो ये है 2, देन इट इज 3, देन इट इज 4, देन इट इज 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, इट शुड बी बी, इट्स बी, राइट। दोज पीपल 61A कैसे हुआ? मैंने तो 61 करवाया, तो उसमें तो मेरा आंसर इज नॉट, हाँ वही मैं हूं, ठीक है। ओके फाइन, नो वरीज। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कंट्रीब्यूशन टू बिहेवियर इकोनॉमिक्स, ये तो हमारे बैनर्जी साहब हैं, राइट। एस्टर डिफोलो एंड माइकल क्रेमर, अभिजीत बैनर्जी। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच टू ग्लोबल पॉवर्टी, दिस इज बेसिकली द नोबेल लॉटरेट, जो याद है एक नोबेल नोबेल प्राइज विनर का मैंने दिया था, वही से क्वेश्चन है ये, नोबेल प्राइज विनर। सो कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर इकोनॉमिक्स, दिस वाज दिस ग्लोबल ग्लोबल experimental approach to global poverty, this is this. I think I'm doing, maybe doing something wrong. Contribution to contract theory is Richard Thaler. Is it right? No, something is wrong here. Let me just see this. Uh, एक second.
should be Richard. Ah, this is wrong. I've done it wrong. The behavioral should be going for Richard Thaler. Behavioral should be going for Richard Thaler. पॉवर्टी का ये जाएगा यहाँ पे, दिस इज दिस, एंड देन कंट्रीब्यूशन विल बी वेलफेयर इकोनॉमिक्स इज अमर्त्य सेन, एंड दिस इज कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज दिस इज 2019, दिस इज 20 रिचर्ड थ्रेलर का था 2011 आई सपोज, एंड एक्सपेरिमेंटल, एंड दिस वेलफेयर इकोनॉमिक्स दिस वाज 2001 और 1991 1990 ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं है इसका, राइट, वेलफेयर का कंट्रीब्यूशन टू कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वाज बेसिकली 2017, राइट, तो दिस शुड बी 4312, 4312 ए इज द आंसर. आई डिड समथिंग रॉन्ग, पहले मैं कुछ अलग कर रहा था. एनीवे, यस, फाइन फाइन, डन, इज दैट डन? नहीं, रिचर्ड थ्रेलर इज समथिंग डिफरेंट, रिचर्ड थ्रेलर इज समथिंग डिफरेंट, रिचर्ड स्टोन इज समथिंग डिफरेंट. Richard Stone, consumer behavior. Richard Thaler is contract theory, is behavioral economics in that case. Okay. Next. Calder-Hicks compensation criteria, simple. Bertson social welfare function. Kenneth Arrow impossibility theorem. Friedman is natural rate of unemployment. So I think you can match it up. 4. This should be 4. Then Bertson coming up with 1. Kenneth 3 and 2. 4 1 3 2. C should be the answer. Yes, C. राइट, तो दोज हु आर फॉलोइंग मी ऑन द रिकॉर्डिंग वर्जन, प्लीज इसको स्टॉप करके देख लीजिएगा एक बार, राइट. ओके. हाँ, अच्छा, कल कल के गेट के सेशन में एक मुझे कुछ मिला ऐसा, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज यूवी कर्व, ब्रिब्रिज कर्व और यूवी कर्व. हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस टर्म फॉर द फर्स्ट टाइम? मुझे अभी कर्व देख के याद आ गया. एनीबडी? I have discussed this in today's paid session, but in case किसी को पता नहीं है, तो definitely those people who are still here with some skepticism कि let's get some best out of it, whether ये पढ़ा पाएंगे नहीं पढ़ा पाएंगे, तो उनके लिए मैंने ये क्वेश्चन जरा रख दिया है. Anybody who know what is the meaning of the Beveridge curve, UV curve? UV curve का मतलब है unemployment job vacancy rate. This is called as unemployment and job vacancy rate. So this is what the power of this channel, right? Fine. Okay, so offer curve किसके साथ है? Offer curve में basically it is the reciprocal demand. Laffer curve is basically tax revenue and tax rates. So let's see, public revenue के साथ ये जा सकता है. Lawrence curve is basically inequality. King demand curve is sticky prices. So we don't have anything for the market segmentation, nothing. So it should be 3, then it is 5, then it is 4, then it is 2. 3 5 4 2, it should be B. Let's see. Man, I'm doing these questions with all of you for the first time. I don't know the answers. I don't know anything. Those people who are thinking कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, just let's start with doing this because I actually don't know the answers, right? मेरी पीपीटी कोई और बनाता है, तो I don't do this. मुझे actually याद नहीं है. I'm doing it like you are doing it for the first time. There might be something wrong, and I'm live. This is not a recorded. Okay, perfect competition. So there are many sellers, right? Okay. Monopoly, many sellers, differentiated product. Differentiated product should be going with the imperfect competition. Monopoly, single seller. Oligopoly, few sellers. So this is basically coming out to be 1, 3, 2, and 4. 1, 2, 1, 3, 2, 4. It should be A. Let's see. A. ओके, एन इंक्वायरी इन द, देखो अब ये आ गया आपका बुक्स का नाम, राइट? ऑथर्स एंड बुक्स मैच करना है. एन इंक्वायरी इन द नेचर, इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन. वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ. द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, दिस इज बेसिकली रिकार्डो. द कैपिटल, इट इज मार्क्स, एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट इज शुम्पीटर, राइट? दास कैपिटल. तो ये द क्यों लिखा हुआ है? यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है. इट शुड बी दास कैपिटल. Anyway, so answer will be 2 1 3 4. 2 1 3 4. 2 1 3 4. It should be C. Let's see the answer. Yes, C.
नेक्स्ट, लीनियर आइसोक्वांट का कैसा होता है? लीनियर आइसोक्वांट, इट इज लाइक दिस, Q is equal to W, no sorry, Q, okay, just a minute. Q is equal to alpha, L, A alpha B K, right? So linear isoquant, and this is a production function, so it will go with linear. We have elasticity of substitution equal to, this is a क्या कहते हैं इसको, रुकिए, this is basically perfect substitute. So there exists a perfect substitutability between these two. ये कहाँ जाएगा? It is perfect substitutability here. Input output isoquant, or it is also called as Leontief production function, right? Leontief production function, or it is called as perfect complementary, strict complementary. So this has a L-shaped curve. It looks like Q is equal to minimum of X, K and L, right? So this will go for like this. This is the curve. इसका ऐसा होता है, इसका ऐसा होता है. Kinged isoquant, there exists a limited substitutability of the capital. Smooth convex, it has the continuous substitutability. So this is basically the case of Cobb-Douglas production function. You can think of the elasticity of substitution is equal to 1 here. The elasticity of substitution is less than 1. Elasticity of substitution is around minus infinity, and elasticity of substitution is equal to infinity. That is what the entire logic. So I will put here as 0 because limited hai. So I'll put here as 0. This is 0. We have already done this. So ये है 3, 1, 4 and 2. 3, 1, 4, 2. This should be the answer. C. Let's see the answer. Yes. मजा आ गया. ऐसे क्वेश्चन मिल जाए. Yes, direct from the instant economics. What was the answer of that? We will be talking about that tomorrow, not today. Beveridge curve is unemployment and job vacancy. It is not related. It was not the answer. N.S. Rao, right? Okay. Next, let's move to the next question. Additional of new machine. देखो ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं, इसलिए मैं ये मैच द फॉलोइंग भी जानबूझ के लेके आया हूं. टेक्नोलॉजी इज एक्सोजीनियस, इन्वेस्टमेंट इज रिलेटेड टू द चेंज इन आउटपुट, रिडक्शन इन द कॉर्पोरेट टैक्स रेट. थोड़ा सोचो, दिमाग लगाइए. So addition to the addition of new machine, it is net investment. Technology is exogenous, it is neoclassical growth rate, growth theory, that is Solo Swan model. Reduction in the corporate tax rate, it is basically rightward shift of the MFC schedule, because marginal fixed cost will be shifting rightward. Reduction है, so ये cost, marginal cost right side में चला जाएगा, cost कम हो रहा है. So this is the cost, this is will be the cost. Investment in the is related to the change in the output. This is the basically how the delta I is relating to the delta Y. So this is the accelerator or fixed theory of investment. So this goes, let's match it now. It is 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4. B should be the answer. Let's see. It's B. Yes. Next question. ये हुरड क्या होता है? हैरड. Haradomer, it is razor edge. Razor edge भी कहते हैं, knife edge भी कहते हैं, तो both in the same thing. Schumpeter swam like. John Robinson, it is golden rules. Robert Solo, it is this. हो गया, simple. 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. 3, 4, 1, 2. It should be D. Right? Let's see. Yes, D. Now all the questions are assertion reason based question. ठीक है, ध्यान से करेंगे and we'll see there are now around 25 questions that I'm going to take are all assertion reason based. Are we ready? All reason based. Right? Let's start with this now. Post reform liberal trade policy have stimulated India's growth. Post reform, that is basically after 1991 के बाद जो trade reforms हुए थे, that has led to India's trade growth. Private enterprise got opportunity to contribute to the growth of Indian manufacturing industry. बिल्कुल सही है. अब इसको चेक कीजिए पहले.
पोस्ट रिफॉर्म इंडिया का ग्रोथ रेट कितना था? सो पहले कितना था? 3 हिंदू ग्रोथ रेट में चल रहे थे हम लोग, राइट? 2 से 3 में चल रहे थे। उसके बाद जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, उसके बाद वी शूट इट अप टू लाइक 8, 7, 9%, 7, 8.5, 8.7 ऐसे चल रहे थे हम लोग। सो दैट वाज बेसिकली यस, ट्रेड लिबरल पॉलिसी, एफडीआई आना शुरू हुआ, राइट? पोर्टफोलियो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होना शुरू हुआ, फिर करंट कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी हुआ। दिस इज ऑल लेड टू, कल ये क्वेश्चन भी आया था, मैंने अभी याद आ गया। प्राइवेट एंटरप्राइजेस गॉट अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट, यस डेफिनेटली। सो दैट इज व्हाई दिस इज दिस इज राइट। नाउ सी दिस, बिकॉज ऑफ प्राइवेट एंटरप्राइजेस गॉट अपॉर्चुनिटी टू कंट्रीब्यूट, इसीलिए पोस्ट रिफॉर्म में ट्रेड पॉलिसीज का क्या था? Think of it. Do you think that because of the because of this trade related policies, the private sector got the opportunity, and that is why we had India's growth? I will say yes. I will say yes. Right. So I will go with A. The reason being why private enterprises got opportunity growth in the India's manufacturing sector. जब इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डेवलप होना शुरू हुआ, तो we were in a position to export and import. We were exporting more, because of which India's growth was led. So trade as a growth engine in case of India, India and China के केस में trade helped India and China to grow like anything. तभी India and China was one time it was they were both um, इनको मतलब द ग्रोथ, मतलब क्या बोलूं, डेवलप्ड कंट्री के साथ ये दोनों को एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्टस देखा गया था। So yes, I will say I'm not with very 90%. I'm 90% I am sure that it will be manufacturing industry because exports बड़े थे. But if you see it from other perspective, if you see it from others perspective, India's manufacturing industry was not so developed as of now also. आज की डेट में भी इतना डेवलप नहीं है. तो India's growth is because of service sector, right? India's growth was basically because of service sector. So if I say manufacturing industry, this is correct, this is correct, but manufacturing sector has not led to India's growth. It has, the service sector has led to the growth. So my answer will be in this case, because going by this, A is right, R is right, but R is not a correct explanation of A. राइट, आई विल गो लाइक दिस, बिकॉज अगर आप सर्विस सेक्टर में भी हमारे एक्सपोर्ट देखते हैं, तो हमारे एक्सपोर्ट सेक्टर सर्विस सेक्टर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं. इट्स नॉट द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, राइट? आई होप दैट ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, राइट? इज दैट क्लियर? अंडरस्टूड द पॉइंट? It is not the manufacturing sector because of which India's trade policy has India has shown a growth. It is because of service sector. Right. So I will say it should be answer B. Both A and R are correct, but R is not a correct explanation of A. Right. Let's see what is the official answer. It is saying A. So now that is why we have the jobless growth. Now I will give you my rationale why I said कि it is service sector. Jobless growth हुआ है. तो jobless growth इसलिए हुआ है because manufacturing sector सही से develop नहीं हो पाया. Right. So that is why it should not be A. It should be B. Right. I have given my point to all of you to ponder about, to think about whether the official answer key is right or my explanation is right. It's not about कि official answer key सही है तो पत्थर की लकीर है, नहीं. चैलेंज नहीं किया गया तो वैसे का वैसे ही रह जाता है. Okay. Demonetization of 8th of November 2016 led to the withdrawal of a legal status of the high denomination currency. Yes, definitely 500 and 1000 रुपए का नोट हमने they were they were उनका स्टेटस चेंज कर दिया गया था. They were no more a legal tender. Prior to demonetization, the currency in circulation was about 12% of the GDP. 12% of the GDP. Yes, this is also right because 500 and 1000 rupees प्लस जितने भी बाकी करेंसी सर्कुलेशन थे वो 12% के करीब जीडीपी का था इंडिया का. सो यहीं से एक पॉइंट और समझ लीजिए कि इंडिया का जो M1 है, बेसिकली M1 जो है इंडिया का, right, that was not the entire GDP, that was just the 12% of India का GDP. यानी कि जितने हमारे पास कैश है वो कैश एक्चुअली M1 है, और जो 12% वो जीडीपी का है, यानी कि इंडिया के जीडीपी का सिर्फ 12% कैश में है हमारे पास. दैट इज द करेंसी जो कि प्रिंटेड है. ओके, सो आई विल से यस दिस वाज राइट, दिस इज राइट, बट नॉट बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन ये किया गया. डिमोनेट 12% का था इंडिया का जीडीपी, करेंसी सर्कुलेशन वाज 12% ऑफ इंडिया जीडीपी. बिकॉज ऑफ दिस रीजन डिमोनेटाइजेशन वाज नॉट डन.
right? So I will go with this both. Okay, if A and R are true, but R is not a correct explanation of A. I will rather say पूरा बोलना ही सही है. A and A बोलिए नहीं तो assertion बोलिए. जो लिखा है वो मत पढ़िए. Right? Fine. Is that clear? कोई डाउट इसमें? देखिए हर क्वेश्चन में व्हाट आई एम डूइंग, आई एम गोइंग बाय द assertion, देन आई एम गोइंग बाय द रीजन, एंड उसके बाद आई एम ट्राइंग टू डू इट इन अ पैसिव वॉइस करने के बाद मुझे उसके बाद आंसर आ जाता है. Right? Any doubt in this? Yes, GDP happened due to multiplier then. Yes, आगे चलते हैं. Which it is B? Okay. Yes, it's B. Next question. According to Keynes, individual hold either cash or all bonds, right? So either they will have cash or they will have bond. That is why the total money demand is equal to, this is total. It is either transaction plus precaution and money demand for speculation purpose. And that is why we have a curve like this, right? जब speculation बढ़ेगा तो transaction कम होगा, और जब transaction बढ़ेगा तो speculation कम होगा, because they have the fixed amount. So either they can have that in cash or in terms of bond. इसी चीज को बाद में टॉबिन ने कहा था, गलत है ये, कि it has to be a portfolio. So this is exactly right. According to Keynes, is speculative demand for money is independent of interest rate? No, no. This was the problem. देखिए, classicals mentioned that money demand is basically a function of money demand for transaction and precaution, whereas Keynes mentioned that money demand is a function of this transaction, precaution plus the speculation. इसी वजह से सारा कुछ यहाँ पे change हो गया था, right? So this is incorrect. So according to Keynes, the speculative demand for money is independent of interest rate. This is wrong. This is right. So A is right, R is false. I will go with C. Done? Okay, fine. Next, move to the next question. Yes, it's C. Answer is C. Next question. There would be no trade off between inflation and unemployment even in the short run if people are rational. Exactly. जितनी बार हमने इसको पढ़ा है, देखो रैशनल एक्सपेक्टेशन, अगर मैं बात करूं, तीन स्कूल्स हैं, राइट? सो फिलिप्स कर्व को अगर मैं देखूं केन्स के हिसाब से, इन द शॉर्ट रन, इन द लॉन्ग रन, सो केन्स के हिसाब से इट इज लाइक दिस, फिलिप्स कर्व. Long run में, as per Keynes, it is like this. Milton Friedman, as per him, this is like this. It can go negative also. But in long run, it is like this. As per rational expectation, in the short run, it is like this. In the long run, also, it is like this. So there would be no trade-off between the inflation and unemployment, even if in the short run, if the people are expectations are rational. Exactly, because people are rational, they will not make any systematic error. They will, any case, अगर कभी वो गलती करते भी हैं तो that will be temporary in nature, that will be completely random. Rational expectation imply forecasting of the future correctly on an average, right? So I will put an word on an average here, right? On an average, they are correct, right? They are correct. I think rational expectation imply the forecasting the future correctly. So this is why, because this is why there will not be any if they can predict the future. Now what I'm doing, क्या रीजन की वजह से एजुकेशन सही है, ये सोच रहा हूं एक बार मैं. So rational expectation imply that they can forecast the future correctly on an average. तो अगर ये करेक्टली करते हैं तो क्या अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन में कोई रिलेशनशिप नहीं होगा? नो, इट इज बेसिकली, द रीजन इज, the reason is more or less because if there is no relationship, that implies कि वो रियल वेज को काउंट करेंगे, दे विल बार्गेन फॉर द रियल वेज इंक्रीज, और वेज इंक्रीज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट गिरेगा. I think the right answer should be this, B, because they can forecast future correctly, so that is why they will be, there is irrational. Here we have animal spirit, here we have animal spirit, here we have adaptive spirit, adaptive expectation. Here we have rational expectation. So I will go with B. Both A and R are true, and R explains correctly the A. So this is what my answer. Yes. Okay. The correct answer says A. How? R is not correct explanation. No. Incorrect.
So what is the difference between Keynes, Milton Friedman, and rational expectation? Equilibrium income requires equality between planned saving and planned investment. Yes, these are all X ante, right? When planned savings exceed the planned investment, then the value of output is greater. Planned saving is greater than planned saving is greater than planned savings is greater than planned investment. So इसका मतलब है कि inventories will be drawn down, consumption is more, consumption is less, then the value of output is more than the aggregate expenditure. Output will be more and aggregate expenditure will be less. Yes, so there will be aggregate demand will be less than the aggregate supply. Yes, so both of them are correct. R is a correct explanation, and this is basically I will go with B. This is the answer. जब सेविंग ज्यादा है, इन्वेस्टमेंट कम है, कंजम्पशन कम है, एग्रीगेट डिमांड कम है और इन्वेस्टमेंट इज देयर, राइट? तो सप्लाई विल बी मोर. यस, दिस इज राइट. So both A and R are true, and R explains the A. The answer is B. Yes. Oh my God. So ऐसे ऐसे सेशन लाने ही नहीं चाहिए, राइट? नाउ यू कैन सी द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स. Assertion reason based लेके आइए. So and that is not being done. Okay, fine. Original Phillips curve shows the negative relationship between the money wage and the rate of unemployment. Yes, original was right. Phillips curve ने यही कहा था. Phillips curve is stable in the short run. Stable in the short run. No, it is not stable. It is not stable. It is not stable. It is not stable. It is unstable. अगर stable होगा तो it will be like this. So this is wrong. This is correct. I will go with A is true, R is false. Are you get? Should I continue with the session? Yeah. Should I leave this here? Waiting. It is not stable. Should I continue? Yeah. Should I stop it here? Yes. It's loop counter clockwise, clockwise. I don't think that this is of any utility for it is serving any purpose for any students. Let's see. Okay, let's quickly do this. Unchanged policy, monetary policy with expansionary fiscal policy results in an increase in the rate of interest. Unchanged monetary policy with expansion in fiscal policy expand will result in the rate of interest. Yes, देखिए मैंने ISLM से इसको काम को कर लिया. This is IS2 because of increase in the fiscal policy, increase in G or reduction in tax. IS ऊपर चला गया, increase in interest rate हो गया. Crowding out effect occurs when the supply of money increased along with no. Crowding out effect नहीं, crowding out में this will not happen. Crowding out does not happen when supply of money is increased. No, it is गलत है, ये गलत है. This is right. Crowding out happens when public expansion, public investment increases, and that raises the IS curve to the right. उसके बाद क्या होता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट घट जाता है. So I will go with this. A is true, R is false. Let me see the answer. It is C. Yes. No, both are not correct. सुरभि, क्राउडिंग आउट तब होता है जब, यही तो पॉइंट है, अकर्स व्हेन सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज्ड. कैसे सप्लाई ऑफ मनी इंक्रीज? ऊपर क्या लिखा है? अनचेंज मॉनेटरी पॉलिसी. सो अगर अनचेंज मॉनेटरी पॉलिसी है तो हाउ मनी कैन इंक्रीज, राइट? यहां से भी गेट का क्वेश्चन आया था. स्टॉक मार्केट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट. डू यू थिंक यस और नो? यस, सेबी का तो यही है. आरबीआई रेगुलेट द स्टॉक मार्केट इन इंडिया. नो. सो दिस इज राइट. सो आई विल से that A is true, R is false. C. Let's see. Yes. Next. Fantastic question. अब मैं यहां पे इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट कर देता हूं, ठीक है?
Anybody knows what is the meaning of RMS? RMS. So if I do it arithmetic mean, it is a plus b upon 2 greater than equal to, it is root a b, then it is hm. So it is 2 upon 1 by ab, 1 upon b. What is RMS? It is like this, it is a square plus b square upon 2. Root means square, right? Yes. तो ये है आरएमएस, ये डिग्री याद रखिएगा। तो दिस इज आरएमएस का इक्वेशन, दिस इज मीन, दिस इज जीएम एंड दिस इज एचएम। देखो बहुत बारीक पॉइंट है यहाँ पे। तो दिस इज राइट, राइट, फैंटास्टिक, बिकॉज उसका ये ऑब्वियसली ये वाला ज्यादा होगा, ये रूट में है ये कम होगा, और ये तो नीचे चला गया तो ये तो और कम होगा, ठीक है। तो दिस इज फाइन। नाउ रीड द रीजन। मोड इज द इंटरवल एंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो आप हाँ कर देंगे, ठीक है। But actually में this is incorrect. Mode is not an interval, it is a point. Highest frequency किसी एक का होता है. It is a highest frequency, right? This is a point. Mean can be of a interval, not mode. The mode is not an interval, it is highest frequency है. This is fine. So I think I will be going with, no, why mode is not interval. So that is why A is true but R is false. This will be right because यहाँ पे interval दे रखा है. So mode is a point or it is a value. It has a item that has the highest frequency. That is that value of x that has the highest frequency. ये वो value है x की जिसकी सबसे ज्यादा frequency है. Right? It's a point. So this is the case. A is true, R is false. Right? Okay. Moving to the next question. ट्रेजिडी ऑफ कॉमन टेक्स प्लेस एंड एफेक्ट इन्वायरमेंट, ये क्या है? ट्रेजिडी ऑफ कॉमन टेक्स प्लेस एंड एफेक्ट इन्वायरमेंट, ठीक है। इट टेक्स प्लेस व्हेन द नेचुरल रिसोर्सेज आर ओवर एक्सप्लॉइटेड एंड मिसयूज्ड बाय द इंडिविजुअल्स। यहां पे एक पॉइंट जो मुझे नहीं मिल रहा वो ये है कि दीज कॉमन्स आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरस, ठीक है, ये वाला पॉइंट मुझे नहीं मिला। तो एनीवे, कंसीडरिंग दैट नॉन एक्सक्लूडेबल है तो इसलिए ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। It takes place when the natural resources are overexploited and misused by the individual. I will say, okay, fine. So this is right. This is also right. It affects the common, right? I will go with this. Both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Right? Mode is that observation which repeats frequently. सोनाली, जो आपने बोला है that is basically applicable in case of individual series. What will happen in case of discrete series? What will happen in case of discrete series? It is that value of x that has a highest frequency, right? If you say that in observation, fine. If you say that in terms of x, also fine. है ना? अच्छा point था. Okay, so I will say A is the right answer. Okay, A is the right answer. Externalities may lead to market failure. अब यहाँ पे मैं छोटा सा point बता देता हूँ. I have been repeating this in very new classes. So there are two cases. Market failure is basically of two cases. एक है complete market failure, दूसरा है partial market failure. In complete market failure, there is no market. There is no market. In partial market failure, market तो है, we have the market, but जो demand है, जो supply है, वो pseudo demand है, pseudo supply है, right? इसकी वजह से क्या होता है? The prices are wrongly determined. So either the prices are wrongly determined or the quantity are wrongly determined. So prices या तो गलत होंगे या तो quantity गलत हो जाएगी यहाँ पे. So complete market failure particularly happens in public good, right? This is what the situation. And पार्शियल मार्केट फेलियर होता है क्लब गुड, कॉमन गुड में। मार्केट तो है लेकिन प्राइसेस और क्वांटिटी गलत है।
राइट. सो इसलिए एक्सटर्नलिटीज में लीड टू मार्केट फेलियर, डेफिनेटली यस. बिकॉज ऑफ एक्सटर्नलिटीज द डिमांड विल बी ग्रेटर देन सप्लाई और सप्लाई विल बी ग्रेटर देन सप्लाई डिमांड, ऐसा कुछ होगा. इट इज राइट. प्राइस मैकेनिज्म टेक्स इनटू अकाउंट द फुल सोशल कॉस्ट एंड सोशल बेनिफिट. नो, प्राइसिंग मैकेनिज्म विल नॉट टेक इट. तभी तो प्राइस फेल हो रहा है. प्राइस फेल होने का मतलब है, राइट, प्राइस फेल होने का मतलब है कि इट इज नॉट द अप्रोप्रिएट बिकॉज द प्राइसेस आर रॉन्ग. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. राइट, ये समझ में आया कि नहीं आया? हाउ दिस पॉइंट इज इनकरेक्ट? So this is incorrect. I will say A is true, R is false. कहां गया? A is true, R is false. Price mechanism takes into account the full ठीक है, full private cost and private benefit. Where we have the marginal, what to say? Where we have the willingness to pay is equal to willingness to accept. प्राइसिंग वो सिग्नल है जो कि क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई को मिलाता है. आई हैव बीन रिपीटेडली सेइंग दिस कि जब भी देखिए, जब भी व्हेनेवर वी हैव दिस इज डिमांड, दिस इज सप्लाई, ये सप्लाई है, ये डिमांड है, सबसे पहले क्या डिटरमाइन होता है? इट इज द प्राइस. ये वो प्राइस है जो कि क्वांटिटी डिमांड एंड क्वांटिटी सप्लाई को मिलाता है. राइट. Price is the only answer that is there in both the equation. If you write it quantity supply and quantity demand, this is different, this is different, but it is a function of price, it is also a function of price. That price which I put it here, that will equate both of them. So it is the price that determines. So if the price is wrong, how can it take care of the social cost? समझ में आ गया? Any more explanation you need for this? Okay, moving to the next question. Positive externalities exist ये क्या है? In an economy. ये शायद कुछ गलत किया होगा इन्होंने. Positive externality exist in an economy. Positive externalities we do have in case of production and do have in the case of consumption. The marginal social benefit of production and consumption exceeds the marginal benefit. Okay, I understood. देखिए, so when we have the positive externality, so in this case the social cost, the social benefit and of production, the production में अगर हम देखेंगे and consumption का देख लेते हैं, तो marginal benefit will be less than the social benefit. Marginal social benefit exceeds the marginal benefit. ठीक है, it is exist in the economy. ठीक है, we have the case for merit goods where we have the positive externality. So I will go with D. Both A and R is correct, and R is a correct explanation of this. Right? Should be D. Okay. Property rights over the natural resources assigned to the individual would protect the environment. Property rights over the natural resources assigned to the individuals, बहुत important word है, ठीक है, would protect the environment. ये I think this should be correct. ये correct है. It controls the release of the influence of the property owner if the right is defined properly. बिल्कुल सही है. So after a certain point of time, it doesn't matter who pollutes and who is the victim. So I will go with A, Coase theorem, right? So assigning the would protect the environment and it controls the release of effluent. So it is both A and R are correct, and R is the correct explanation of A. Shadow price concept was introduced by Jen Timbergen in 1901. He is a Nobel laureate, and shadow price concept is helpful in cost and benefit analysis of the project. Yes, I will say yes, but because it is helpful, so he introduced. नहीं, समझ रहे हो कि what should be the problem in this case? Shadow price concept was introduced by Jem Timbergen. ठीक है, ये तो सही है. It is helpful in cost and benefit analysis of project. ये भी ठीक है, but because of it is helpful, that was introduced by Jem Timbergen. I am not agreeing to this point. मुझे थोड़ा सा problem लग रहा है यहाँ पे. It should be A. Just because shadow prices is helpful in cost and benefit of analysis of a project, it has to be introduced by Jem Timbergen. थोड़ा गलत है. It is not correct. I hope all of you are getting the reason कि ये क्यों हुआ. Right? All of you understood this?
कुछ प्रॉब्लम है, कोई समझ नहीं आया ऐसा, क्योंकि उसने ये कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस में हेल्पफुल है इसलिए उसने इंट्रोड्यूस किया, ये तो गलत हो जाएगा ना। आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यस। हाँ, इंडिविजुअल करेक्ट है बट उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है ये। डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट टेंड्स टू इंक्रीज द प्राइस लेवल। देखते हैं, $1 इज इक्वल टू ₹50, नाउ $1 बिकम्स रुपीज सपोज 70। तो इसकी वजह से क्या हुआ, वी हैव द डेप्रिसिएशन हुआ, तो इट विल लीड टू द इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट्स, राइट, दिस इज क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इट विल लीड टू द इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट के बढ़ने से फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर इफेक्ट करेगा, इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा तो प्राइस, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो प्राइसेस राइज होंगे, ठीक है, ये आई विल टेक दिस पॉइंट। सेंट्रल बैंक अंडरटेक्स नो स्टेबलाइजिंग पॉलिसी, सेंट्रल बैंक टेक्स नो स्टेबलाइजिंग पॉलिसी, depreciation, devaluation, take no stabilizing policy। प्राइसेस बढ़ गए, यहाँ पे प्राइसेस बढ़ने के बाद आरबीआई विल टेक सम मेजर बिकॉज द प्राइस आर राइजिंग, सो इन्फ्लेशन लेवल बढ़ रहा है, सो दे विल ट्राई टू रिड्यूस द मनी सप्लाई, सो दिस विल बी रॉन्ग, they will undertake some stabilizing policy because of the inflation rises, so I will go with A is true, R is false। Did you understand this concept? समझ में आया क्वेश्चन में क्या था? पहली बात तो डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट से कैसे हमने प्राइस को लिंक किया, राइट, अंडरस्टूड दिस। तो डेप्रिसिएशन हुआ, एक्सपोर्ट बढ़ेगा बिकॉज एक्सपोर्ट सस्ते हो गए हैं, फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर से इनकम बढ़ गया, एग्रीगेट डिमांड बढ़ गया, एंड डिमांड बढ़ने से प्राइसेस बढ़ गए। सी मैनेज में तो सेंट्रल बैंक करेगी ही, यस दैट इज व्हाई, राइट, क्योंकि जब प्राइसेस बढ़ गया, राइट, मेरे दिमाग में पहले क्या पॉइंट आया, व्हाट वाज माय थॉट प्रोसेस पहले जब मैंने क्वेश्चन को देखा, तो मैंने सोचा कि ये डेप्रिसिएशन है, दिस इज बेसिकली अंडर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में सेंट्रल बैंक हैज नो रोल, राइट, उस हिसाब से जा रहा था, तभी मैंने डिवैल्यूएशन वर्ड यूज किया, डिवैल्यूएशन, बट ये डेप्रिसिएशन है, यहां पे सेंट्रल बैंक का कोई काम नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलाइज, इन टर्म्स ऑफ पुटिंग दैट बैक टू द फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, राइट, तो दैट इज पॉइंट क्लियर। बट जैसे ही प्राइसेस इंक्रीज हो गया उसके बाद आरबीआई का काम तो आना ही है, बिकॉज इन्फ्लेशन लेवल टॉलरेंस लेवल से ऊपर चले जाएगा, +-2% से ऊपर चले जाएगा, सो दैट इज व्हाई इट इज अंडरटेक्स नो स्टेबलाइजिंग पॉलिसी, ये गलत हो जाएगा, आई विल गो विद सी। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? वोंट ऑटोमेटिक स्टेबलाइजिंग, नहीं, ऑटोमेटिक कैसे होगा, प्राइसेस बढ़ चुके हैं, नाउ हाउ इट विल बी ऑटोमेटिक, but sir inflation determines exchange rate, the vice versa also, if you see this income, right, this is income, so you have consumption plus investment plus government expenditure plus export minus import, so when exports are rising, what is happening, because of foreign trade multiplier, that is export multiplier, the x, when x is rising, delta y is rising by multiple times, right, by multiple times, so by suppose k times, when income is rising, people are having more increase in income, because of this the demand for money, what is demand for money, kpy, so this is also increasing, because of this the prices will increase, when aggregate demand will rise more, aggregate supply itni jaldi nahi kar payega, so income will rise, price will rise, so this is right। Any more point, any more explanation? Good question। Here it is not about the automatic stabilization, please understand this point also, prices increase ho jayega, it is not about seigniorage, if suppose government increases tax rate, यहां पे दो ऑप्शन बचते हैं गवर्नमेंट के पास, जब प्राइसेस बढ़ चुके हैं तो दो ऑप्शन है, ईदर टू रिड्यूस दिस बाय सपोज इनकम टैक्स, बाय इंक्रीजिंग द इनकम टैक्स, और बाय रिड्यूसिंग द मनी एक्सपेंशन, मॉनेटरी एक्सपेंशन को कम कर दीजिए, तब जाके ये काम करेगा, राइट, यस, कॉन्ट्रैक्शनल मॉनेटरी पॉलिसी फॉलो करेगा यहां पे। जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस इन 2017, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस इन 2017 as a measure to promote cooperative federalism in India, definitely yes, because सारे के सारे states सब नेशन लेवल पे एक हो जाएगा, एक जीएसटी होगा, राइट, सो सेंट्रल स्टेट, बिल्कुल ठीक है, दिस इज परफेक्टली करेक्ट। अंडर cooperative federalism, federal, state and the local government make policies separately, no, this is incorrect,
राइट। ये फेडरलिज्म का मतलब ही है कि देर इज समथिंग कॉल्ड सेंटर, सेंटर पे स्टेट डिपेंडेंट रहेगा तो एक ही पॉलिसी रहेगी, सो दैट देर इज अ कंप्लीट अलाइनमेंट ऑफ द टैक्स रेट्स। कैस्केडिंग इफेक्ट को हटाने के लिए तो ये सब किया गया था, राइट। सो दिस इज, आई विल गो विथ ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। RBI has kept the inflation target to at 4% plus minus 2%. Yes, this is what the tolerance level is. Right, this is what the tolerance level is. आज थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग बट रीशेड्यूल हो गया है, तो इट इज 4%। और इसमें जब तक -2% करते हैं अगर हम, दैट इज फ्रॉम 2% टू 6%, इस टाइम पीरियड में अगर इन्फ्लेशन लेवल रहता है तब तक आरबीआई इज गोइंग टू फॉलो अ एकोमोडेटिव स्टैंस। इट इज गोइंग टू फॉलो अ एकोमोडेटिव स्टैंस, मतलब जस्ट टू एकोमोडेट द थिंग्स। आरबीआई इज द मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द इंडिया। सो नाउ थिंक ऑफ इट, क्या इसकी वजह से वो हुआ है? ये ठीक है, ये भी ठीक है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, जस्ट बिकॉज आरबीआई मॉनेटरी अथॉरिटी है इसलिए इन्फ्लेशन टारगेट ये रखा गया है। कल को अगर मान लीजिए कोई और एबीसी होता तो फिर कुछ और होता। नो, आई विल गो विथ बी। बहुत सारे एजर्शन है आज। ओके, so q is equal to a l alpha k beta. This is given to us. It is a CRS case. In Cobb-Douglas production function, the share of capital in total output is lambda. Is share of labor. Share of labor. Relative share is definitely this, right? Relative part सही है. I will take it. इसका मतलब है when L will increase, suppose by 1%, the quantity will increase by अल्फा परसेंटेज, राइट। तो अगर अल्फा मान लीजिए 0.7 है, नॉर्मली इट इज 0.66 एज पर द एम्पेरिकल रिजल्ट्स। तो इफ L increases by 1%, the quantity will increase by 0.66%. Okay, so this is right. बिल्कुल सही है जी, ये भी सही है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, राइट। क्योंकि लेबर का टोटल आउटपुट में अल्फा है तो इट इज बिकॉज ऑफ दिस द कॉब डगलस फंक्शन एज एल। नो, I will say this, both A and R are correct and R is a correct explanation. Done? Any doubt here? Yes. Okay, next. Inclusion of income and wealth in consumption function will lead to the problem of multiplicity. Definitely yes. और ये मैंने बहुत बार इसको यूज भी किया है, आप लोगों के साथ भी किया है. So suppose C is equal to C bar plus small c y plus suppose beta W, where y can be shown as suppose 2W. Income is twice of wealth, right? Suppose if it is the case, so in this case what we can do, C bar plus small c into 2W plus beta W. So C bar plus 2CW plus beta W, right? So it can be written as C bar plus 2 C plus beta into W. So we have just one independent variable and this is the dependent variable. Now if we run a regression or OLS, we get the coefficient for independent variable, we don't get any coefficient, और तोड़ के नहीं मिलता है for y and w. Similarly you can do it the other way around, suppose w is equal to y of 2 ऐसा करके. So this is definitely yes, because these two are linearly correlation. This is fine. Multicollinearity arises when two or more independent variables are correlated. Yes, definitely. So this is, I will say both A and R are correct and R explains A, right? It is A. बहुत ही बढ़िया. Okay, the argument that the firm polluting the environment should pay the cost of doing so has been opposed in the international market. Question थोड़ा सा अजीब सा है ये. Okay, has been opposed, should pay. Okay, the argument that the firm polluting the environment should pay the cost of doing so has been opposed, okay, in the international firm. Big firms in rich country with lots of financial resources will be able to pay, while the firms in the poor country be will not be able to pay. Okay, this is right, this is right, and R is a correct explanation of A. Is that here? Yes, I will go with this. I think this requires no explanation. The balance of payment always balances, definitely yes, in accounting sense.
द सरप्लस डेफिशिएट इन बीओपी करंट अकाउंट इज एग्जैक्टली मैच बाय द डेफिशिएट, सरप्लस यहां पे है, करंट अकाउंट है, ठीक है, डेफिशिएट सरप्लस बिल्कुल डेफिनेटली राइट, दैट इज व्हाई वी हैव ए, राइट, सो दिस इज आल्सो ए, आई थिंक, फाइन, डन, आई हैव टेकन दिस मच क्वेश्चंस ऑन टुडे। मजा आया? एंड टुमारो जॉइन मी ऑन द ऐप at 9 p.m. This is tomorrow. Done? मुझे जरूर बताना कि ऐसा सेशन लेके आना चाहिए था कि नहीं, या मेरी गलती थी ये आज जो मैंने किया, राइट, बिकॉज आई डोंट थिंक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वर क्वाइट इनफ, राइट, टू कम अप विद this kind of session, right? ओके, डू लेट मी नो, आपके कुछ भी कमेंट्स अगर हैं तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। यस, एंड डोंट वरी व्हेन आई एम हियर, डोंट फियर व्हेन अमित इज हियर, राइट। तो कल मिलते हैं, गेट सेशन करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं और किसी और के बारे में बात नहीं होती है। एंड डू शेयर दिस लिंक विद ऑल योर फ्रेंड्स, देयर मे बी प्लेंटी क्वेश्चंस। एक बात याद रखिएगा कि जब जून का पेपर हम लोग करेंगे, जून 2022 का पेपर हम लोग करेंगे, तो इस इसमें जब रिजल्ट निकलने के बाद जब नया नोटिफिकेशन निकलेगा तब पढ़ के फायदा नहीं है। डे बाय डे जो ये सब नॉर्थ ईस्ट के क्वेश्चंस हैं, गेट के क्वेश्चंस हैं, यहाँ के क्वेश्चन, पीएचडी के क्वेश्चन, जब आप इसका एक कोलाज बनाते हैं, राइट, व्हेन यू आर डूइंग द, व्हेन यू आर मेकिंग अ कोलाज ऑफ इट, ऐसा कोलाज जो ढूंढने से भी नहीं मिलता, ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप डेली पढ़ेंगे, डेली आप इसका स्क्रीनशॉट बचा के रखेंगे, तो डेफिनेटली आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई होप दैट दिस इज द प्रैक्टिस दैट मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव डन, एंड उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, राइट, फाइन। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, एंड गुड नाइट, बाय बाय।